So hello guys. So this is the section 2 of the HTML course and आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे बहुत ही सिंपल चीज कि व्हाट इज द यूज ऑफ HTML. ओके, सो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? लास्ट टाइम हमने देखा था, लेट मी शेयर रिकैप द सेशन. तो दिस वाज द असाइनमेंट व्हिच वी हैव डन. ये देखा था. तो ये क्या है? ये एक वेब पेज है, वेबसाइट है, ठीक है. HTML पेज है जो सर्वर पे है एंड इट इज डिस्प्लेड इन योर ब्राउजर. ये आपके ब्राउजर पे डिस्प्लेड हो गया, ठीक है. और ये थोड़ा सा स्टाइलिंग के बारे में देखा था हमने कि हाउ टू डू द स्टाइलिंग, हाउ टू डिस्प्ले द इमेज, इसका हाइट कैसे सेट किया था हमने, एंड द लिंक. सिंपल लाइक समथिंग व्हिच इज यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन. तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर्ड है? एक फाइल में स्टोर्ड है, HTML फाइल में इन योर सर्वर. वहां से ये आपके ब्राउजर पे आएगा एंड विल गेट डिस्प्लेड. तो बेसिकली एक वेब पेज का पर्पस क्या है? टू डिस्प्ले सम इंफॉर्मेशन एंड दैट इंफॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम अ वेब सर्वर. सिंपल. एक दूसरा इसका यूज है टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू. सपोज यू वांट टू एंटर सम इंफॉर्मेशन which will go back to the server. वापस सर्वर से नहीं आ रहा है, आपको भेजना है सर्वर पे. तो वो उसके लिए हमें फॉर्म यूज करना पड़ता है, HTML फॉर्म यूज करना पड़ता है, which is the what I will say, which is the thing which we are going to study today. Okay, now in this session. तो ये आप देखो, सिंपल कुछ भी नहीं है. एक सिंपल वेब पेज है. इसमें दो टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, जो जिसमें डिस्प्ले हो रहा है एंटर योर फर्स्ट नेम, एंटर एरिया पिन कोड, और एक बटन है जिसमें सेव लिखा हुआ. इफ आई सेव दिस थिंग इट विल सेव इट, ठीक है. तो ये हम आज करेंगे कि ये कैसे बनता है, हाउ डज इट वर्क, एंड definitely. And at the end of this thing, you will be given a homework that this is your task. ये तो हम आज यहाँ करने वाले हैं, like first name, area pin code, and this will be your task which is already uploaded in github.com. You can refer my github.com/Rahul Akhoury. इस पे आपको ऑलरेडी सेशन 2 HTML में आप जाओगे. HTML में लास्ट सेशन 1 का भी सारा कंटेंट मैंने डाला हुआ है जो हमने किया था. सिमिलरली HTML सेशन 2 है, उसमें आप जाओगे, you will get the content. And don't look into task.html because this is a solution, ठीक है. You just look in task.png which is the thing you have to do. So ये आपको करना है, खुद से ट्राई करना है. You try on yourself. If you're not able to do, definitely you can look up the solution which is task.html. So don't look into this HTML file without trying by yourself, because if you will not try, there's no use of following my videos and following me. Because मेरा जो भी purpose है is to like convey a simple thing that you can only learn by doing. Okay, and if you don't do practice, if you don't do just watching my video, it will not have any purpose. Okay, so let's start. So how to make something like this? Enter first name, enter area pin code. ये text box कैसे आता है? What is the tag? We know what is the tag for that thing, and what's the tag for this button, and how to do this thing. Okay, suppose मैंने first name डाला Rahul and area pin code डाला 411002. ठीक है, सिंपल सा टेक्स्ट बॉक्स है. नो ये इंफॉर्मेशन, ये क्या है? सम नेम, ये पिन कोड है. दिस इंफॉर्मेशन मुझे सेव करना है एंड वी हैव टू पास दिस डेटा और दिस इंफॉर्मेशन बैक टू द सर्वर. तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? ये एक फॉर्म टैग होता है. दिस आई विल शो यू द HTML tags in a moment. But when you save this thing, just see what happens. This is the sample.html file. यहाँ पर आप ये देखो URL. Ignore this part. Ignore this part. Don't worry about this thing. You just look in this thing. ये है sample.html file which is displayed here. The moment I click on save, just check यहाँ पर क्या होता है. What happens here? Just see here what happens. जैसे मैंने ये क्लिक किया, just see what happens. Something like this. F name. I will just zoom this thing. So if you see, something is coming after the HTML question mark. So this is a new thing which is added when you click this save button. जब आपने ये save button को click किया,
जो भी आपने यहाँ पर एंटर किया था, मैंने क्या एंटर किया था, राहुल, और मैंने यहाँ पर एरिया पिन कोड क्या एंटर किया था, समथिंग। इफ यू सी दैट, यहाँ पर आप देखो ये एफ नेम्स इक्वल टू राहुल आ रहा है एंड पिन कोड इक्वल टू आ रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, हाउ इट इज वर्किंग। बट अगर आप ध्यान से देखो तो हमने ये वैल्यू, ये डेटा पास कर दिया बैक टू द सर्वर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट यू कैन से पैरामीटर्स। तो इस हर एक एलिमेंट का एक नाम होता है। इसका नाम मैंने क्या दिया था, एफ नेम। Okay, the name which I have given to this element is input text box is f name, first name, and इसका नाम मैंने दिया था simple pin code. Okay, and this is the ampersand sign in between these two parameter. ठीक है, अगर आप देखोगे, I will copy this thing somewhere and let me. मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, कंट्रोल थोड़ा बड़ा करने का ट्राई करना, because you can see what is happening. So f name equal to Rahul, बीच में देखो ये एम्परसेंट साइन है, ठीक है। फिर दूसरा पैरामीटर स्टार्ट हो गया पिन कोड, बिकॉज ये जो मेरा एचटीएमएल पेज था यहाँ, और ये मेरा फॉर्म है, एचटीएमएल फॉर्म है, इसमें दो एलिमेंट्स है, ठीक है, एक फर्स्ट नेम का, एक पिन कोड का। अगर इसमें और भी एलिमेंट्स होते तो यू विल गेट मोर पैरामीटर्स हियर, बट सिंस हमने यहाँ पर दो एंटर किया है, ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, तो इन दोनों का यहाँ पर व्हाट आई विल से, द नेम ऑफ द एलिमेंट इज देयर एंड द वैल्यू इज देयर। इसका नाम क्या है, एफ नेम है फर्स्ट एलिमेंट का, उसका वैल्यू क्या है, राहुल। सेकंड का नेम क्या है, एलिमेंट का पिन कोड, एंड वैल्यू जो मैंने एंटर किया, और ये सेव हो जाएगा। ये जब बैकएंड पे जाएगा तो बैकएंड पे जो भी आपका वहां पर होगा वो आपका सेव हो जाएगा। बट एज अ यूआई डेवलपर, एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट व्हाट हैपेंस इन द बैकएंड, दैट इज नॉट योर कंसर्न। Focus on the front end, कि अच्छा फ्रंट एंड में क्या करना पड़ता है, so it works properly. So this is the way it works. Okay, now so okay, so let's, okay, so I have also done something which I'll show you in a moment, but let's start doing. So what I will do, I will make a demo file just for showing you the demo. So demo.html blank, completely blank. So we'll try to make what is displayed here. तो आप देखो मैंने क्या डिस्प्ले किया, एक टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले किया। तो टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले करने का क्या टैग होता है, उसका टैग होता है इनपुट। So I'll write input, okay, and I will close this thing, okay, and I will close with this slash, because इसमें कुछ inner text नहीं है, it will display a text box। इतने मैंने डिस्प्ले किया। अब ये मुझे, ये मैंने VS Code आज यूज किया। VS Code is a good editor, you can try this thing. So VS Code is, so I'm using VS Code. So I have to open this file. So how to open this in browser? कुछ भी नहीं करो, राइट क्लिक करो, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर एक ऑप्शन आता है, वो क्लिक करो, इट विल ओपन द फोल्डर, जिस फोल्डर में ये आप बना रहे हो, इस पे वर्क कर रहे हो, और डबल क्लिक ऑन दिस थिंग demo.html, let's see what happens. It opens and you can see it display a text box. Okay, display a text box just like this. Let me close this thing. Yeah, तो it display the text box similarly like this. देखो यहाँ पे text box था, यहाँ भी text box है, ठीक है। यहाँ भी मैं क्लिक करता हूँ, ये becomes bold, here also the same thing. So we are successful in at least making the text box, ठीक है। But here it is blank, nothing is displayed inside this thing. Here you can see enter first name. Okay, this is like a, you can say a background text. It's not the original text. If I start typing something, it will disappear. Okay, वो गायब हो जाता है पीछे का बैकग्राउंड, पर वो बैकग्राउंड टेक्स्ट किधर से आया, कहाँ से आया? So for that thing there is a attribute. Okay, so in first of all, input is a tag. Okay, a tag, it starts here, it ends here itself, because ये sign last में बताया था आपको is ending for this tag. We can always add sorry, yeah, we can always add a attribute,
And here what we are going to add an attribute is known as placeholder. I can say, okay, enter name. So if I say enter name, if I go here and I refresh this demo file, see what happens. Enter name. यहाँ पर क्या था? Enter first name. I'm not going to copy each, but I'm trying to show you how does it work. तो जो भी आप वहां पर प्लेस होल्डर में आप वो वैल्यूज जो भी आप लिखोगे वो डिस्प्ले करेगा वहां पर. वेरी सिंपल. Okay. Now we are done. Almost done. First name. I'll change this to first name. And similarly, we'll make one more text box, which is enter area pin code. Okay. So I will do one thing. Enter scope. Let me copy first name. So enter first name. I will do copy and paste. Copy किया. Control C and Control V. स्पेस एक थोड़ा स्पेस दिया है ना. एंड सेकेंड टेक्स्ट क्या था? देखो एंटर एरिया पिन कोड. सो प्लेस होल्डर में लिखूंगा एंटर एरिया पिन कोड. ओके, so done. अभी I will try to refresh this. आप सेव करो है ना. every time you have to save it and after saving come to this thing. मैंने एक और टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया. दो डिस्प्ले हो गया. ये टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले हुआ, ये टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले हुआ. बट द थिंग इज दैट both are displayed in the same line. ठीक है. तो कैसे हम डिफरेंस करेंगे? फॉर दैट थिंग देयर इज अ टैग व्हिच इज नोन एज ब्रेक लाइन. ब्रेक लाइन इज फॉर न्यू लाइन. दोनों के बीच में आपको स्पेस चाहिए तो ब्रेक लाइन दो. तो इट विल पुट इट इन अ न्यू लाइन. ओके, सो ब्रेक लाइन इज यूज्ड जब भी आपको दो एलिमेंट में एक लाइन चाहिए. अच्छा, ये एलिमेंट यहाँ फिनिश हो गया and now the next element should start from the next new next line. So you can use the br tag, break lines, no break line. If you use this thing, put it in between this thing, see what happens. So now if I go and refresh this thing, see it becomes next line. But unlike this thing, there's a मतलब there's no space between this thing. ठीक है, यहाँ पर स्पेस है. तो उसके लिए क्या करो? एक और br tag दे दो. So there will be two line breaks. तो दो लाइन का डिफरेंस हो जाएगा. And now if you refresh this thing, you will see there's a gap in between. ठीक है, because हमने दो लाइन ब्रेक किया. वन लाइन ब्रेक, वन लाइन ब्रेक, तो गैप बढ़ गया. Very simple things. ठीक है. तो अभी वी आर ऑलमोस्ट देयर. एरिया पिन कोड पे आ गए और फिर लास्ट में एक बटन दिख रहा है सेम लाइन पे. ठीक है, तो विल ट्राई टू डू दैट थिंग. ओके, सेम लाइन पे पुट अ बटन. सो हाउ टू डू दैट थिंग? उसके लिए टैग है जिसको हम बोलते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू बटन. नहीं, हाँ बटन भी बोल सकते हैं बट एक्चुअली बटन. ओके, लेट मी स्टार्ट विद बटन टैग बिकॉज बटन. ओके, I don't know. Okay, button tag and then I will close this thing. So closing करने के लिए I will use the this backslash. But I am not like doing like this and again input tag. ठीक है. अब बहुत लोग might be wondering कि अच्छा ये tag में ऐसे ऐसा क्यों नहीं किया? Input start, input end. Because there is no input element here. अगर आप लिखोगे अच्छा save me, it will not have any effect. Let's see what happens. If you write like this, input type equal to button. Okay, this. ठीक है, और बीच में आपने कंटेंट डाला. आपको लगता है कि अच्छा ये बटन का नाम ऐसा सेव नहीं हो जाएगा. ऐसा नहीं होगा. जस्ट चेक व्हाट हैपेंस. इफ यू कम हियर, सो आफ्टर दिस थिंग, देखो आप यहाँ बटन पे नाम भी नहीं आया, सेव में अलग से आ गया. सो दिस टैग डजंट वर्क लाइक दैट. दैट्स व्हाई वी डोंट हैव टू डू लाइक दैट. कर लो एंड नाउ यू सेव इट एंड नाउ जस्ट यू गो एंड रिफ्रेश दिस थिंग. सी, बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर कुछ भी नाम नहीं है. इनपुट टाइप. सो इनपुट टाइप बटन दिया तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा वैल्यू. सो वैल्यू इज लाइक यू कैन गिव अ नेम टू दिस बटन व्हिच विल बी डिस्प्लेड इन द बटन. तो मुझे सेव देना है. मैंने वैल्यू दिया इक्वल टू सेव. सो वैल्यू इज फॉर डिस्प्लेइंग दैट बटन टेक्स्ट. तो बटन का टेक्स्ट डालना है तो इनपुट टाइप बटन डाला, सेव दो, तो सेम सेम हो गया. इट इज आल्सो सेम, दिस इज आल्सो सेम, लुक्स द सेम. ओके, बट दिस इज वी आर नॉट डन येट, है ना. सो लेट मी अगेन एक्सप्लेन यू. इनपुट, ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है, दिस आल्सो इज इनपुट. ओके,
सो इनपुट, बट यहाँ पर मैंने एक टाइप इक्वल टू बटन डाला. यू माइट बी वंडरिंग कि टाइप क्या है, व्हाट इज टाइप इक्वल टू बटन. ओके, सो जस्ट see, so input is used to enter something, correct? Why it is known as input? Because enter first name, मतलब we are trying to enter something. So we are trying to input some value. है ना, input दे रहे हैं हम अपना कि मेरा ये input है, आप ले लो, and you just pass it back to the server. So input आपने दिया, ठीक है. Similarly, input type button क्यों है यहाँ पर, ठीक है? Because जो आप information यहाँ पर लिख रहे हो, like you're putting it here, if you write input type equal to button, it will display the button. Okay, so button tag is also defined as a input. Okay, so button tag भी आपका input type में defined, input and then type. Okay, so this might be confusing because you're studying it for the very first time. I agree with you, but see, the thing is that things will not be very clear in for the first go. ठीक है, so just hold it. आप देखो, आप टाइप करो, try to just replicate कि अच्छा मैं ये टाइप करता हूँ तो whether I am getting the output or not. So if you're getting the output, that is what matters. ठीक है, और धीरे धीरे आपको समझ में आएगा. Once you do more and more practice, you understand the things. So don't stop if you're not understanding anything. Okay, it's okay. That is perfectly fine. Okay, nobody understand 100% in the first time. So चलता है. अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है 100%, just go with that thing. Just copy and paste, and see the output. How does it work? Now, यहाँ तक तो कर लिया, but let me show you the entire functionality of this thing. ठीक है, अभी मैंने सैंपल पे मान लो फिर से लिखता हूँ राहुल एंड, अभी मैं राहुल नहीं लिखूंगा, लिखूंगा राज, and the area pin code I will give something 83400 something. So check what happens here. F name Rahul, pin code here. But now if I save, the value changes. Let's check what happens. The value changes. F name equal to Raj and pin code equal to whatever I entered. Okay. तो obviously जो भी आप एंटर करोगे वो आपको सबमिट होगा, वो दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है. बट ये जो डेमो डॉट एचटीएमएल बनाया है, अगर लेट मी ट्राई द सेम थिंग, यहाँ भी मैं डालता हूँ राज. Now I will try to put some value 834002. I try to save it. If you see, on saving, nothing is happening. This value is not getting submitted to the server. Okay, like वो back end पे नहीं जा रहा, front end पे ही आपका है, save पे कुछ हो नहीं रहा है. देखो, nothing is happening. But if I do a save here, if I put a value, यहाँ पे value डाला, ठीक है, और कुछ भी values डाला. If I save here, you check the URL as well as check the text box. What happens when I click here? यहाँ से disappear हो गया. The value gets disappeared. ठीक है. Why did it disappeared? Because the value first of all got submitted in the URL. इसको URL बोलते हैं. This is your address URL. तो आपका जो ये एड्रेस बार है, इस पे जो आपको वैल्यूज है वो दिखता है कि क्या सबमिट हुआ. एंड द पेज अगेन कम बैक फ्रॉम द सर्वर से एक नया पेज आता है. दैट्स व्हाई यू सी द ब्लैंक पेज. अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बट समझो ऐसा कि आपका पेज में जो डेटा आपने भेज दिया सर्वर पे, सबमिट हो गया, ये वैल्यू सबमिट हो गया, और फिर से नया पेज आपके पास आया है. तो इट लुक्स लाइक कि बिकॉज नाउ ये जो फाइल है, ठीक है, आप जो फाइल देख रहे हो आपको लग रहा है कि ये आपके लोकल पे है, ठीक है, बट एंड एक्चुअली व्हेन यू होस्ट इट ऑन अ थर्ड, सपोज यू गो इन godready.com और एनी वेब होस्टिंग वेबसाइट आप होस्ट करोगे, तो ये आपका लोकल कंप्यूटर में नहीं रहेगा, कहीं पर सर्वर पे रहेगा. तो वहां से वो जो फाइल आएगा, ओके, इट विल ऑब्वियसली इट गो कम्स फ्रॉम अ सर्वर टू अ ब्राउजर. ओके, तो आपने जो डेटा एंटर किया, अच्छा माय नेम इज दिस, माय पिन कोड इज दैट, दैट आल्सो गोस फ्रॉम योर ब्राउजर टू द सर्वर. तो ये बैक एंड फोर्थ चलता है, ठीक है. पहले फाइल आया आपके पास, फिर आपने फाइल को एंटर किया, वो पीछे गया, बैक एंड पे गया. जब गया तो वापस से नया पेज रीलोड होगा. इट विल रीलोड, इट विल कम अ न्यू पेज, सेम पेज बट रीलोड होके आएगा, एंड रीलोड होके आएगा तो फ्रेश दिखेगा. तो इट इज फ्रेश पेज. तो दैट्स व्हाई इफ यू सी, when you enter, one more time I'll show you what happens. Just see this thing, what happens here, or see this, see here, just see this flicker आपने देखा, that is reloading. It goes and come back because अभी ये इतना fast है local पे, तो you can't see.
ओके, बट अगर कोई रियल वेबसाइट पे जाके आप कुछ क्लिक करते हो, इट टेक्स अ व्हाइल. सपोज आई गो टू माय वेबसाइट, okay, udev.com, udev.com. This is suppose my website. Okay, I go in this thing. It takes a while to load. वो load हो रहा है क्योंकि वहां से अभी फाइल आ रहा है, HTML फाइल आ रहा है. Now it gets loaded. Okay, see it loading दिखा रहा है. Now if I click on contact us, just see what happens. Just see this is loading. It takes time. तो वो आपको दिखता है. यहाँ पर जो आप एंटर करते हो वैल्यूज, again let me show you. Okay, so let me clear this thing first of all. Let me clear this thing. Just enter. तो ये आपको नया लोड हो गया. ठीक है. If I enter RA and click save, see what happens here. It flickers. It reloads. देखो देखा आपने क्या हुआ? फिर से दिखाता हूँ. You try. It doesn't matter. Just see what happens. Just check here. It reloading. It takes a while. तो डेटा गया, पेज लोड हुआ. ठीक है, यहाँ भी यही होता है. आप कोई भी नया पेज खोलते हो, रिलोड होगा. देखो रिलोड हो रहा है, मतलब वो फ्रेश पेज सर्वर से ला रहा है. तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि once you submit, it will go back and submit the values in the form, and वो जो डेटा है आपके पास वापस से डेटा तो सबमिट हो जाएगा, बट एक नया पेज रीलोड होके आएगा. ओके, तो बेसिक समझा रहा हूँ. इट माइट नॉट बी क्लियर फर्स्ट मोमेंट, बट सो दैट इज ओके. ठीक है. नाउ बट आई विल शो यू मोर फंक्शनैलिटी. बट यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर तो सेव ही नहीं हो रहा है. सो व्हाई दिस इज? बिकॉज यहाँ पर हमने इनपुट टाइप में डिफरेंस है. यहाँ इनपुट टाइप बटन दिया है मैंने, उसको मुझे चेंज करना पड़ेगा. मुझे इनपुट टाइप सबमिट देना पड़ेगा. तो सबमिट इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको अपना फॉर्म, HTML फॉर्म में जो भी एलिमेंट्स है, जो भी आपने इनपुट टाइप डिफाइन किया है, वो सबमिट करना है. तो उसके लिए फिर हमें जो टाइप होगा बटन का, इट हैज टू बी सबमिट. इज वेरी, अगेन आई एम रिपीटिंग. ठीक है. तो आपसे पूछोगे सर फिर बटन का क्या यूज है, वो मैं विल कम टू नो लेटर. ओके, बट व्हेन यू टॉकिंग अबाउट प्योर HTML, फॉरगेट अबाउट जावास्क्रिप्ट. जावास्क्रिप्ट तो बाद में आएगा, एंड प्रोग्रामिंग ऑन ब्राउजर. बट सिंपल अगर एक HTML फॉर्म है, a simple HTML form is there, okay, and you want to submit the whatever you are entering, so you have to use type equal to submit. There is no other way. If you really want to submit the HTML elements back to the server, so always you have to use type equal to submit. ये आप याद रखो. I'm repeating this thing because you have to remember this thing, है ना. Submit करते हो, फॉर्म को सबमिट करते हो. तो फॉर्म में क्या होता है? मल्टीपल. अभी फॉर्म का मीनिंग क्या होता है? अभी आप सपोज यू गो टू अ कॉलेज, ओके, यू वांट टू टेक एडमिशन. वो आपको एक फॉर्म देगा. ठीक है, आप लिखो, अपना नाम लिखो, यू एंटर योर नेम, यू एंटर योर डिटेल्स. यू गो टू अ हॉस्पिटल, यू वांट टू टेक एडमिशन, वो भी एक आपको फॉर्म देगा कि भाई अपना नाम लिखो, अपने ये लिखो. तो फॉर्म इज अगेन द सेम थिंग इज हियर. फॉर्म वहां जो फॉर्म है, यहाँ पे फॉर्म, बट दिस इज अ फॉर्म इन डिफरेंट फॉर्मेट. दिस इज अ वेब पेज, है ना. तो एक वेबसाइट पे भी फॉर्म दिख रहा है, HTML फॉर्म है, बट फॉर्म का पर्पस वही है, इन्फॉर्मेशन लेना, पास बैक टू द बैकएंड. ठीक है. सो यहाँ पर आप देखो कि अभी तक हम लोग स्टक है कहाँ पर, कि सेव किया तो यहाँ तो सेव होता है. अगर मैंने पिन कोड डाला समथिंग समथिंग, अब देखो पिन कोड यहाँ पर सेव होता है. यू कैन सी पिन कोड सेविंग, है ना, वैल्यूज गेटिंग पास टू द बैकएंड. बट यहाँ पर अभी मैंने सबमिट किया है, तो लेट मी चेक व्हाट हैपेंस. इफ आई सेव, स्टिल इट इज नॉट सेविंग. ठीक है, बिकॉज आई एम मिसिंग वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज द फॉर्म टैग. कि आपका ये दोनों एलिमेंट एक पर्टिकुलर फॉर्म में है. ठीक है, लाइक let me explain like that. Suppose you go to your PF department, your income tax में जाओगे. Suppose tomorrow you to fill income tax. Suppose you are selling, buying a second hand bike or car. तो उसके लिए you have to fill multiple form number this, form number this. This is not one single form. You have multiple forms. ये भी फॉर्म आप सबमिट करते हो, वो भी फॉर्म सबमिट करते हो, दो डिफरेंट फॉर्म है. ठीक है. You have to submit ITR, in income tax return, something like that. So you enter multiple forms. एक फॉर्म से नहीं होता है. Sometimes you fill multiple form number this, form number that. Similarly, एक वेब पेज पे we can have multiple forms. Okay, like we can have, अभी ये आपका फॉर्म दिख रहा है ना. फॉर्म is like this. The form is like
इट हैज अ पर्पस। ये फॉर्म का क्या पर्पस है? नेम और पिन कोड लेने के लिए। ये फॉर्म का क्या पर्पस है? माइट बी डिफरेंट। Okay, so every form has a different purpose. Suppose I open this, go here and click on contact us. So it will open a, a form. ये form है, ये आपका नाम भरो, आपने email भरो, you enter your phone number, then you enter a message कि अच्छा आपको क्या help चाहिए, and then you click the send button. तो ये form submit हो जाएगा. Like this is a form. ठीक है, but so we can have multiple forms in a same web page, but I'm not going too much into that thing. The same for your information. तो अभी right now we're talking about this form. It starts here, it ends here because इसमें दो ही elements है. The purpose of this form is to enter these two elements and get the value of these two elements. So we have to wrap, मतलब उसको enclose करना पड़ेगा. These two elements, first name and pin code, these two elements, we have to enclose with a, what I can say, a form tag. कि ये single form है, ये single form है. Okay, this is one single form which two elements, name and pin code. For that thing, I have to go and write a form tag for form. स्टार्ट होगा ये एंड होगा, तो इसका जो एंडिंग है आई विल कट इट, paste in the end, because this everything, all this thing, let me put a tab, so देखते हैं, just check what I'm trying to do. तो ये जो input tag है आपका, first name last name और button है, this all comes under the form. तो ये आपका सिंगल फॉर्म है. ओके, इट डिनोट्स दैट थिंग. सो जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे ये सबमिट हो जाएगा बैक एंड पे. ठीक है, सो अभी लेट मी ट्राई whether now it works or not. First name डाला मैंने, whatever, pin code डाला, whatever, and I try to save this, check this URL, what happens? It submits, question mark. You see question mark is coming and some reload happened. See, if I again I show you, it's blank, but if I click it, see it is reloading. See, earlier it was not reloading, मतलब वो backend पे data भेज रहा है but it is blank. Why it is blank वो बताता हूँ आपको. Okay, why it is blank? It is trying to save send, but there is nothing it is able to send. But whereas यहाँ पर तो send कर पाता है. ठीक है, यहाँ पर आप देखो तो proper save, because we have given name to the element. कि इस element का नाम है first name, इस element का नाम है pin code. तो ये pin code हो गया, ये first name हो गया. तो यहाँ पर भी आपको देना पड़ेगा. You have to give this thing. So for that thing you have to give a attribute. So ये placeholder was the attribute for this input tag. Input is a tag, और टैग के अंदर जो हम प्रॉपर्टीज लिखते हैं, प्लेस होल्डर व्हाटएवर, लाइक इमेज में हाइट लिखते हैं, those are known as attributes. So we have to give one more attribute, is known as name. Name is, you can give whatever, but for here you will give first name, or you can give last name or whatever, depends. You can give only name. Pin code है, I will give name equal to pin. Okay, थोड़ा डिफरेंस कर रहा हूँ just to make you understand. जो भी हम नाम देंगे एलिमेंट्स का, वो नाम पास होके आएगा. So now you check what happens in demo. I refresh this thing. I enter the first name Raj, pin code I enter whatever, and I click on save. And now you can see name is passing back and pin code is also passing back, because the pin code, this element name is pin, 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 and this element name is name, NAME, because वो हमने दिया है, देखो आप, we have given that thing, that's why. It's very simple, it's not complicated. Okay, okay, so I guess you are understanding. Okay, and please practice along with the video. ठीक है, अब देखो सिर्फ नहीं तो कोई फायदा नहीं. Now again I come back to this. Let me try something. Okay, now I am trying to give a long name. I'll give RAHULLL. But देखो कि length fix हो गया. I am trying to enter more characters, but I'm not able to enter more than how many characters? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 भी नहीं. I'm able to enter only 6 characters. ठीक है, तो हाउ कैन आई अचीव दिस थिंग, है ना. यहाँ पर तो मैंने ऐसे लगाया है ये चीज की, यहाँ पर मैक्सिमम यू कैन एंटर 6 कैरेक्टर, नॉट मोर देन दैट. हाउ कैन वी अचीव दैट? उसके लिए एक एट्रीब्यूट आता है. ओके, आई वांट टू सपोज आई वांट टू पुट हियर व्हिच इज नोन एज मैक्स लेंथ. मैक्स लेंथ सपोज आई विल गिव ओनली 3, जस्ट फॉर एग्जांपल से. मैक्स लेंथ इज अ एट्रीब्यूट, इसका वैल्यू मैंने दिया है 3. सो व्हाट हैपेंस इफ आई गो हियर and refresh this thing, and now try to enter 1, 2, 3, 4. I'm not able to enter 4 because the max length is 3 of this
input. Okay. Now here I'll try to enter the pin code, a long pin code 1000000000. You might be wondering ऐसा pin code होता है क्या? Pin code is not valid. Okay. So in HTML, can we restrict कि अच्छा आपको like you have to put this, like here we are able to restrict this thing that you can't enter more than 6 characters. Okay, you can't enter more than 6 characters. Can we put a restriction here that you can't? Okay, sorry, before doing that, let me show you one more thing. If you see this difference between this and this is a difference. देखने में same है, but the moment I type here, you can see this two arrow, because this is for number. So this is input, but type is number, not a simple, and this is a simple text box. So to make it number, I have to go here and give a type attribute, and value hoga number. You can see a lot of attributes. So I will give number. So number I will give. So आपने number दे दिया. Now you save this thing. Now you will see here also the arrow will appear because now it is a number. Okay, so I forgot to tell you that तो number है, ठीक है? Because you don't want कि pin code में कोई ABCD type कर दे, so they will not be able to enter. I'm trying to enter ABCD, but I'm not able to enter anything. But the moment I enter number, ये number enter हो रहा है, because the type is number. तो आपने restriction डाल दिया कि अच्छा it can be only numeric values, not alphabets. So you can do small restriction by using HTML only. आपको type देना पड़ेगा properly. But text में क्या है? अगर simple text है, we can put a max length property. But for some reason, I'm not going to that reason, the max length property will not work for pin code. Okay, suppose pin code is generally 6 character in India. I will enter 1 2 3 4 5 6 more than that. Okay, but I'm able to enter so many characters. But when I'm able to, so the max length will not work. I've tried that, it doesn't work on number because type is number. So, but I've given one more property. I'll show you. When I save it, it shows that thing. Value must be less than equal to. So it will not allow you. So you can see if I save it, this value does not appear in the pin code because वो submit नहीं करेगा इस form को, because you're giving more than the max value. So max value मैंने लिखा हुआ है. Okay, so for type equal to number, this max length will not work. Okay, you can study about more if you want to explore. You can do more research. Why doesn't it work? But there's something. I'm not going to too much detail, but it doesn't work. But the max value work. So max में दूंगा अच्छा number है. So I can give okay. It has to be 6 digit. So what is the maximum six digit number? So 999999. ये पता होगा basics आपको. I'm not going to teach you maths. Okay. So now if you do, the same thing happens. You can enter anything, but it will not allow you to submit. Okay. It will display, but it will not allow to display. But the moment I will give 999999, it allows me. And you can see, देखना यहाँ पर ये पिन कोड में जो values है वो आएगा. देखो. You can see 99 comes. Okay. Means it gets submitted. So this is what we have done here. Okay. So what I want you to do is to try this particular task where you have to enter mobile number. So try to make it a number. Simple text नहीं बनाओ. Try to make it a number just like that, है ना? And try to put the validation that अच्छा mobile number का आपको पता है it has to be not more than 10 digits. So आप क्या करोगे? कैसे वो validation put करोगे या restriction put करोगे? And then email. Email में क्या होता है कि email also has certain format. But can you put some restriction using some attribute or something like that in HTML? Just HTML, not going to JavaScript directly. We are just focusing on HTML. You explore that thing. You try to search how to deal with email in HTML. You will get something, and then you can try to see. Okay, this is the text value of the. This is very simple assignment, but simple thing will give you the confidence. आप सोचोगे ऐसा इतना सिंपल क्या करना, वो तो ऑलरेडी यहाँ पर हो गया, बट इट्स नॉट लाइक दैट. चेंजिंग स्मॉल थिंग विल मेक यू थिंक, ओके, एंड मेक यू बेटर. ठीक है, सो डू दैट थिंग, डू द प्रैक्टिस,
Okay, do the practice. Task is very important. If you are not able to solve, then you can always go and check the, this is the ready-made solution. But first try. Okay, so I hope you're understanding what I am teaching. Trying to, so I'm not a very good, I will say, a teacher as per se, but I am a very good mentor. So guidance, I will give you very good guidance, and I've given people guidance in the past. If you search my name will appear in Quora. I have more than 2.1 million views. You can go there and check that. So I'm very good in giving advice and mentoring. So I might not be what I'll say teaching uh, in the best way, but I will try to give you the right direction. And direction in life is the most important thing. If you get the right direction, you will almost land uh, in your goal. आपको जो भी goal है आपको पहुंच पाओगे. ठीक है. So with this thing, I will stop. Okay, because it is a long session which happened now. But I hope you will like this thing, and let's meet next time. So till that time, thank you. Bye.